Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Last time we talked about the sociological perspective, and then we discussed what is sociology. If you remember, we talked about the definition of sociology, and we said that sociology is a scientific study of human behavior, or in other words, it is the science of the society, right? How societies develop, how societies change, and how societies grow. We also discussed that sociology is a discipline that attempts to understand the social forces outside us that shape our lives, interests, and personalities. We discussed various examples how societies change our lives. Whatever happens around us, that does affect us, right? So sociology studies that. We talked about different assumptions of sociological perspective, and we discussed individuals by their nature are social beings, and individuals are, for the most part of their life, are socially determined, and individuals create, sustain, change social forms within which they conduct their lives. We discussed the concept of sociological imagination as well. So, sociological imagination, just for the quick recap, is a questioning the structural arrangements that shape our behavior. Now, today we are going to move forward, um, and we are going to talk about how sociology emerged. We've already talked about sociology and common sense, and we discussed in the last lecture, sociology is not common sense. Anything that is considered common sense may not be an organized study, and for sociology, in order to qualify something to be sociology, it has to be an organized study, right? Now, today we are going to talk about development of sociology, how this discipline developed, right? Now, you can understand that philosophers, religious authorities, intellectuals in the ancient and medieval societies, they made observation human behaviors. अब कोई पुराना आज से 2000 साल पहले 3000 साल पहले आप किसी इंटेलेक्चुअल्स को देखें, किसी philosopher को, अरस्तु, for example, Aristotle, Socrates, a number of other people, they all talked about human society. They all talked about human behavior. However, the organized discipline of sociology only started in the 19th century, right? And Europeans, they took the lead. European theorists in 19th century made pioneering contribution to the development of science of human behavior. So the first one we are going to talk about is Auguste Comte. He was a French sociologist. Comte was the one who coined this term sociology. Comte फ्रेंच था बेसिकली, लेकिन जो ये दो वर्ड्स उन्होंने लिए, sociology is basically developed from two words. One was socius, which is a Latin word, means about society or about the human groups, and ology, logy is taken from the Greek word logos. ये आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंड में लॉजी आता है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, zoology, right, anthropology. So sociology means, in other words, the science of society,
the way we study society, right? So Comte, he talked about the society. He was the first one who said that the society needs to be observed and studied in a systematic way. So the scientific principle of positivism, which means whatever, positivism means that things can be studied in an objective manner, in an objective and scientific manner. साइंस की इस टर्म को ऑगस्टे कॉम्टे ने सोशियोलॉजी, सोशल लाइफ में अप्लाई किया, और कॉम्टे का ये ख्याल था कि जैसे हम साइंटिफिक प्रिंसिपल स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह साइंटिफिक लॉ स्टडी कर सकते हैं, इसी तरह हम सोशियोलॉजी को एक साइंस के तौर पर, जो सोसाइटी के बारे में जो नॉलेज है, उसे एक साइंस के तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं, राइट? So basically Auguste, he said that he basically proposed how to apply scientific methods to social life. मैंने last lecture में ये बात की थी कि sociology is not common sense, and since sociology is not common sense, that means it has to be an organized study. In order to qualify an organized study, it must have scientific methods, right? Systematic investigation of behavior. If it is not systematic investigation of behavior, that may not be classed as sociology. So he was interested in social order and social change, how society, changes itself, how society revolutionizes itself, how society changes from one phase to another one, right? So he said, informal observation in life do not make sociology. जैसे अगर हमने कभी रास्ते में जाते बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और इससे हम ये अंदाजा लगा लें कि शहर में हर बंदा लड़ने वाला है, ये इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है सोशियोलॉजी नहीं, ये आप ये चीज समझते हैं कि कोई भी बेशुमार इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है। आप देख रहे होते हैं कोई बंदा मांग रहा है, बैगर, राइट? उससे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें तो दैट माइट नॉट बी करेक्ट unless you study the patterns of many beggars, unless it is an organized systematic study of the society, right? So Comte insisted that what we observe in the human society must be similar in methods to scientific objects. The way we study, the way we use scientific methods to study science, similarly, the similar methods should be applied to the study of sociology, right? Now, the second very important person is Herbert Spencer. Spencer was an English. English means the person who belongs to England, right? So Herbert Spencer, compared with the earlier theorist Auguste Comte, Herbert Spencer said that society, if we want to study society, we have to study the evolutionary process. कैसे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी डेवलप हुई है। ऑगस्टे कॉम्टे का ये कहना था कि हमने सोसाइटी को सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर ले एक ही वक्त में, तो हमें पता चल जाएगा सोसाइटी क्या है। सोशियोलॉजी के नॉलेज के लिए हमें ज़रूरी है कि एक ही वक्त में भी अगर हम स्टडी कर लें तो ये काफ़ी है, ठीक है? जैसे आजकल क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और आपने एक सिस्टमैटिक स्टडी कंडक्ट कर ली तो दैट वुड टेल अ लॉट अबाउट the society. However, Spencer, on the other hand, Spencer said that we cannot understand society unless we know the history of the society, unless we know the evolutionary process of society, right?
unless we know how things developed, how things change. So he used an organic analogy, compared society to living organism made up of interdependent parts. ऑर्गेनिक एनोलॉजी का मतलब है ह्यूमन लाइफ से को यूज करते हुए उसने मिसाल दी सोसाइटी की, जैसे ह्यूमन लाइफ जो है वो बेशुमार, आप अगर इंसान को देखें तो बेशुमार इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। हाथ हैं वो लिंक्ड हैं आपके दिमाग के साथ, ठीक है, दिमाग लिंक्ड है आपके खून की जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसके साथ, राइट? सो Herbert Spencer said, if we want to study society, we have to study society as a whole. We cannot study one part of the society at one point in time. In order to have a comprehensive study of the society, we must look at the evolutionary process. ठीक है? स्पेंसर ने ये कहा कि अगर हम सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, फ्रॉम बार्बेरियन सोसाइटी टू द हायर फॉर्म ऑफ सोसाइटी विच इज सिविलाइज्ड सोसाइटी। बार्बेरियन सोसाइटी वो थी जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग थे, जो जंगल में रहा करते थे, पत्ते खाते थे, ठीक है, दरख्तों से फल तोड़ के खाते थे, शिकार करते थे, बार्बेरियन सोसाइटी। अब उसके मुकाबले में अगर आपने सोसाइटी को समझना है तो स्पेंसर का ये कहना है कि आप वो सारा पीरियड देखें और देखें कि ह्यूमन कैसे सिविलाइज सोसाइटी में कन्वर्ट हुआ। आपने एक टर्म सुनी होगी, एक बड़े मशहूर बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजिकल हिस्ट्री के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, एवोल्यूशन के एक्सपर्ट, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के आपने थ्योरी सुनी होगी कि इंसान बंदर था पहले और बंदर से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ये इंसान बन गया। तो डार्विन ने जो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दी थी, स्पेंसर ने उसी को अप्लाई करने की कोशिश की सोसाइटी। डार्विन का एक बड़ा मशहूर कोट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ये कहता है कि बहुत सारे जानवर जैसे डायनासोर्स हैं वो खत्म हो गए इसलिए कि वो फिटेस्ट नहीं थे। उनसे ज्यादा फिट जानवर और स्पीशीज जो इस कायनात में थी, जो उससे ज्यादा ऐसे जानवर थे जो कि सोसाइटी से, माहौल से ज्यादा बेहतर उनका फिट था, वो जिंदा रह गए, और जो नहीं थे वो वाली नस्लें खत्म हो गई उन जानवरों की, जैसे डायनासोर की आपको मैंने एग्जांपल। इस तरह और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि किसी जमाने में एग्जिस्ट करते थे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म हो गए। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ओनली द फिटेस्ट वुड सर्वाइव। यही बात स्पेंसर ने की। स्पेंसर ने कहा कि ह्यूमन सोसाइटीज जो हैं, एज जनरेशन पास, most capable and intelligent, the fittest member of the society would survive. Those who are not fittest, those who are not the most intelligent people in the society, they would gradually be wiped out. Now, Spencer स्पेंसर का ये कहना था कि जो वेल्थी लोग हैं, जो सोसाइटी में अमीर लोग हैं, दे आर rich because they were the fittest in the society, and those who are poor, they are not capable enough, they are not intelligent enough, and that is why they are not the fittest, and that is why they are poor, right? Now, so Darwinism, the fittest thing, was brought into sociology by Spencer. ये देखें ना, जैसे ये कह रहा है कि स्पेंसर ने कहा कि fittest, rich and powerful deserve to enjoy wealth and success because they have been selected by nature to be what they are, because they were the fittest, and that is why, because they were the most intelligent, and that is why they are selected by nature. ठीक है,
जो गरीब लोग हैं, जो मर जाते हैं गुर्बत की वजह से, जो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, स्पेंसर का ये कहना था कि दे आर नॉट द फिटेस्ट पीपल इन द सोसाइटी एंड दैट इज व्हाई दे आर पुअर। फिर एक और फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, बड़े मशहूर सोशियोलॉजिस्ट, एमाइल डरहेम। Durkheim was also one of the very influential person in the sociology. Durkheim ने बात की सोशल इंटीग्रेशन की। अब आप देखें कि जैसे जैसे सोशियोलॉजी डिफरेंट थेरीज को आप पढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा है कि बहुत हर सोशियोलॉजिस्ट ने एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की। मसलन स्पेंसर ने बात की है कि कैसे सोसाइटी जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले हमने बात की कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने ये बात की कि इट हैज़ टू बी एन organized study of human society. It has to be systematic and scientific study, ठीक है। तो जब सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी की बात की ऑगस्टे कॉम्टे ने, एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म की बात की कि कैसे लोग अमीर होते हैं, कैसे लोग गरीब होते हैं, एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की सोशियोलॉजी। इसी तरह इमाइल डरहेम ने बात की सोशल इंटीग्रेशन की, राइट। Durkheim's major goal was to study how individual behavior is shaped by social factors. इससे पहले बात हो रही है ऑर्गेनाइज स्टडी की, सोशियोलॉजी को स्टडी कैसे करना है। डरहेम ने ये कहा कि लोगों को अगर समझना है तो आप उनका कलेक्टिव बिहेवियर, जो फोर्सेस आपके इर्द गिर्द, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल फोर्सेस से। अगर उस इलाके में गुर्बत है तो वो कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, अगर लोग बहुत अमीर हैं तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो डरहेम का ये कहना था कि अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सोसाइटी बाय स्टडिंग इंडिविजुअल, यू हैव टू स्टडी सोसाइटी एज अ होल। इसलिए डरहेम ने सुइसाइड रेट पे स्टडी की कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, ठीक है। अब उसमें उसने कहा कि Durkheim insisted that behavior cannot be fully understood in individualistic terms. Instead, we must understand within a larger social context. अगर एक बंदा चोरी कर रहा है तो उस अकेले बंदे को स्टडी करके कि वो चोरी क्यों करता है, आप सोसाइटी में चोरी के प्रोसेस को नहीं समझ सकते, या चोरी लोग क्यों करते हैं नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उस इलाके में रोटी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, बुनियादी ज़रूरतें मिलती हैं कि नहीं, उसके इर्द गिर्द लोग कितने लोग जो है वो चीज़ें चुराते हैं। अब इन सारी चीज़ों से मिलकर एक अल्टीमेटली एक सोसाइटी को एज अ होल हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह डरहेम का ये कहना था, इसने ये स्टडी किया कि रिलीजन जो है ये एक मेजर फोर्स है। रिलीजन की वजह से बहुत सारी इंडिविजुअल लाइफ्स अफेक्ट होती हैं। इसलिए अगर आप सोशियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिलीजन। इवन उसने ये भी बात की कि कैसे डिफरेंट रिलीजन दे आर लिंक्ड विद द सुसाइड रेट। डरहेम का ये कहना था कि अगर सोशल उन ग्रुप्स में सुइसाइड ज़्यादा है जिनमें सोशल इंटीग्रेशन कम है, मसलन जो लोग जो मुआशरे अकेले अकेले रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते, जहाँ पे क्लोज फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे सुइसाइड रेट ज़्यादा होगा। इसलिए उसने ये कहा कि प्रोटेस्टेंट एंड अनमैरिड, प्रोटेस्टेंट का मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अनमैरिड people who do not have very close family members around them, ठीक है, unmarried people, they are more likely to commit suicide than those people who live in a socially integrated fashion and those who are married and those who have family, right। तो इसने कहा अकेले लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए सुइसाइड रेट अकेले लोगों में
ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब और जहां पे सोशल टाइज वीकर होगी, अब आप देखें कि आपको ये चीज का अंदाजा होगा कि हालांकि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सटेंडेड सोशल सेटअप है, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं, ज्यादा शेयरिंग एंड केयरिंग इज हायर कंपेयर्ड विद यूरोप। अब उन मुल्कों में जहां पे सोशल इंटीग्रेशन कम है, वहां पे सुइसाइड रेट रिलेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टरहेम ने यह भी कहा कि unmarried and Protestant males, they have higher rate of suicide compared with Catholics, Jews, females and married. ये सारे उसने ग्रुप ये बयान किए जिनमें सोशल इंटीग्रेशन ज्यादा थी. So the force he found to have great impact on suicide was social integration. Okay, so because of social integration, people commit less suicide, right? इसी तरह एक और टर्म उसने की, अनोमी. That means when a person, individual, loses the sense of direction in the society, when social control of individual behavior has become ineffective. एक बंदा सोसाइटी में अपने आप को मिसफिट फील करे, ठीक है, अनोमी. It occurs when people have lost a sense of purpose or direction, often during a time of profound social change. कोई जंग हो रही है तो बहुत बड़ा सोशल चेंज है, पीपल डोंट नो हु दे आर, हु they really want to be, right? They lose a sense of purpose or sense of direction. इसको उन्होंने कहा कि ये एनोमी. इसी तरह altruistic societies हैं. Altruism means somebody that feels a deep sense of moral obligation and is willing to sacrifice for the group's well-being. अल्ट्रुइस्टिक वो सोसाइटीज हैं जहां पे एक इंडिविजुअल अपने जाती फायदे की बजाय ओवरऑल सोसाइटी के फायदे की बात सोचते हैं, ठीक है. तो जब ओवरऑल सोसाइटी की बात आप सोचते हैं, ओवरऑल सोसाइटी के साथ ज्यादा लिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, उस केस में सुइसाइड रेट रिलेटिवली कम होगा. देन कम्स द मैक्स वेबर. Weber was one of the most important contributor to the sociology, who talked about the rise of capitalism. आपको पता है कैपिटलिज्म क्या सिस्टम है आजकल, जिसमें हम इन्वेस्टर्स सारे इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, पैसे से ज्यादा और ज्यादा पैसा बनाया जाता है, इससे ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, ठीक है. इसके मुकाबले में एक सोशलिज्म था या कम्युनिज्म, जो रशिया में जो अब खत्म हो चुका है. कम्युनिज्म ये आपको बताता था कि जनाब सोसाइटी सारी इकट्ठी रहनी है, ठीक है. सोसाइटी में इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है परसू करने वालों को डिस्करेज किया जाए, सोसाइटी एज अ होल सर्वाइव करेगी. तो वेबर ने कहा, वेबर theorized Roman Catholic belief system encouraged Catholics to cling to the traditional way of life, while Protestant belief system, especially Calvinism, encouraged people to embrace change. प्रोटेस्टेंट्स क्या थे? अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बताता हूँ. क्रिश्चियनिटी में दो बड़े फिरके और भी हैं, दो बहुत बड़े फिरके हैं. एक है कैथोलिज्म, कैथोलिक्स उन्हें कहते हैं. कैथोलिज्म जो कैथोलिक चर्च होता है, जिसके हेड is the head of the Catholic Church is the Pope who sit in the Vatican City. ट्रेडिशनली दुनिया में सबसे ज्यादा इसको कैथोलिक्स शायद सबसे ज्यादा हैं, और ट्रेडिशनली कैथोलिक प्रोटेस्टेंटिज्म से बहुत पुराना फिरका. तो कैथोलिक्स ये कहते थे, चर्च ये कहता था ड्यूरिंग द मिडिवल एज, that people should not worry too much about this life. They should not worry too much about profits. They should not worry too much about how much they earn, right? बल्कि वो कहते थे कैथोलिक्स के ये सारी चीजें जो हैं दुनिया में ये आर्जी हैं, इसलिए हमें दुनिया के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो है ना
वी शुड वर्क फॉर लाइफ आफ्टर, आखिरत के लिए काम करें। अब इससे क्या हुआ कि कैथोलिक्स बहुत सारी चीज़ों में लोगों को इनकरेज नहीं करते थे कि वो इनोवेशन की तरफ जाएं या कोई नई चीज़ बनाएं या नया आइडिया दें। गैलीलियो, द फेमस साइंटिस्ट, when he said that Earth is not stationary, Earth revolves around sun। आपको पता है कि कई हजार साल तक इंसानों का यही ख्याल था, क्योंकि अरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखा और पुराने ग्रीक फिलोसफर्स ने, कि ज़मीन अपनी जगह पे खड़ी है और ये सेंटर है सारे कायनात का, और बाकी सारी चीज़ें, सूरज और दूसरी चीज़ें जो हैं, दे रिवॉल्व अराउंड the earth. When Galileo, the famous scientist, said that no, earth is not stationary, earth also moves, earth moves around its moves in its orbit, right? जब उसने ये बातें कही तो चर्च ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया गैलीलियो। जब मुकदमा चलाया गया तो उसमें ये चीज सामने आई, उन मुकदमे में ये कहा गया कि क्योंकि इस बंदे ने खुदा के कामों में मुदाखलत की है, ये कहता है कि ज़मीन एक ही जगह पे खड़ी नहीं है बल्कि मूव कर रही है, तो ये तो खुदा के कामों में मुदाखलत कर रहा है। क्योंकि खुदा के कामों में मुदाखलत कर रहा है, इसलिए इस बंदे को सजाए मौत दी जाए। तो गैलीलियो के लिए डेथ पेनल्टी सजेस्ट की गई। बाद में वो क्योंकि बूढ़ा था और उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उस डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद में, और उसे कहा कि अपने घर में ही उम्र कैद काटेगा, लेकिन जैसे ही अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और सारी ज़िंदगी दोबारा इसने ऐसी बात नहीं करनी कि ज़मीन घूमती है, क्योंकि ये अल्लाह के कामों में, खुदा के कामों में मुदाखलत है और खुदा के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कैथोलिक चर्च था ये बड़ा ट्रेडिशनल था, कंजर्वेटिव, ये कोई नई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी गैलीलियो ने जब कहा कि ज़मीन घूमती है तो उन्होंने कहा इसको मार ही दो। ठीक है। अब उसके मुकाबले में सारी चीज़ों के एक नया फिरका क्रिश्चियनिटी में बना और उसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेनिज्म या प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है। अब जैसे आपको नाम से नज़र आ रहा है कि दिस सेक्ट, ये जो फिरका है, that believes in protesting against the established norms, right? So प्रोटेस्टेंटिज्म एक, अब आजकल अगर देखें तो प्रोटेस्टेंट्स हैं ज़्यादातर हमारे जो यूरोप है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि कैथोलिक चर्च को वो समझते हैं कि इनकी बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स ये कहते हैं कि आप कारोबार करें, कारोबार में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जबकि कैथोलिक्स का बिलीफ ये था कि जो आपको मिल रहा है बस वही खाएं, ज़्यादा दुनिया के लिए एफर्ट ना करें, राइट? सो वेबर ने इस पे बात की, कैथोलिक बिलीफ सिस्टम एनकरेज कैथोलिक्स टू क्लिंग टू द ट्रेडिशन। कैथोलिक से कहते हैं ट्रेडिशन के साथ जुड़े, तो प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ में आप आए, राइट? नाउ वेबर आल्सो स्ट्रेस दैट no one no also stress that one cannot understand human behavior by looking at statistics। जब तक आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि स्टडी कंडक्ट कैसे हुई, जब तक आप ये नहीं देखेंगे इस इलाके में और लोगों की क्या मजबूरियां थी, बैकग्राउंड क्या, हिस्ट्री क्या, उस वक्त तक आप ह्यूमन बिहेवियर जो है एक सोसाइटी में उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। Now, Weber also said to fully comprehend behavior, we must learn subjective meaning people attach to their action, how they themselves viewed and explain their behavior। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? वेबर ने कहा अगर आप बिहेवियर को समझना चाहते हैं, वी मस्ट लर्न द सब्जेक्टिव मीनिंग। जैसे मैं कोई मुझे पूछे कि जनाब किसी घर जाए और वो पूछे कि चाय पियेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं। अब आपको पता है कि इस हल्के से नहीं का मतलब होता है मैंने पीनी है चाय। ठीक है। अच्छा, अब इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग्स।
और क्लियर कट मीनिंग्स नहीं है। अब वेबर का ये कहना था कि जो भी जमीन, जो भी पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या अगर हम वैसे बिहेवियर समझना चाहते हैं ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है, तो हमें वो देखना चाहिए वो किस जुबान में आपस में बात करते हैं, जुगते क्या हैं उनकी, उनके एक दूसरे की तारीफ कैसे करते हैं, एक ही लफ्ज़ को डिफरेंट सब्जेक्टिव मीनिंग्स कैसे असाइन करते हैं। तो ये जो if we want to fully comprehend behavior, we must learn subjective meaning people attach to their actions. हाँ जी, अब जैसे आप वो कोर्ट कचहरी में रिश्वत देते हैं, वो कहते हैं कायदे आज़म लगाया है, क्योंकि नोट पे कायदे आज़म की तस्वीर होती। इसलिए जब तक आपने सब्जेक्टिव मीनिंग उसके नहीं समझ लें, ठीक है, कि अगर कोई रिश्वत दे रहा है और पैसे दे रहा है, उसे कायदे आज़म कह रहा है, तो कायदे आज़म नहीं है, वो रिश्वत है। इवन वो बोल भी रहा है कि हमने कायदे आज़म या ये नोट्स या रिश्वत वॉट, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं इसी तरह करते हैं कि ये एक ओवरऑल, यानी जब आप कायदे आज़म कहते हैं इसका मीनिंग है, सब्जेक्टिव मीनिंग हमने अटैच किया, दैट मीन्स ब्राइबरी, दैट मीन्स रिश्वत, राइट। नाउ इन अदर वर्ड्स, people should use verstehen, the German word for understanding. वेबर ने ये कहा कि लोगों को अगर आपने सोसाइटी समझना है तो हर बंदे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर बंदे को पढ़ना चाहिए, हर बंदा जो जिस हद तक नॉलेज गेन कर सकता है वो नॉलेज गेन करे। इन अदर वर्ड्स, people should use verstehen, the German word for understanding. Then comes Karl Marx. Karl Marx बड़ा मशहूर author है, one of the most influential author in the field of sociology, in the field of economics as well, ठीक है। जो आप देखते हैं आजकल कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारी मार्क्स की टीचिंग से, मार्क्स की बुक से इंस्पायर्ड, और ये सारी दुनिया में इसमें बहुत बड़ा एक ट्रेंड गया किसी ज़माने में, ठीक है। So Marx believed that the key to human history is class conflict. मार्क्स ये कहता है, जैसे वो उससे पहले स्पेंसर ने ये कहा था कि जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये कहते हैं नहीं, सारे की सारी खराबी ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा हुई। मैक्स बिलीव दैट द की टू ह्यूमन हिस्ट्री इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से को अगर आप स्टडी करें तो ही आप ह्यूमन हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दो टर्म्स उसने यूज की सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक पहले कहते हैं बोशुआस, राइट। बोशुआ का मतलब है कि अमीर लोग, कैपिटलिस्ट। उस सोसाइटी में जो अमीर लोग थे वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा प्रोलेटरेट का मतलब है गुरबा। बोशुएज का मतलब है कैपिटलिस्ट, those who have got money, those who have got spare money and they can invest, right? Bourgeois. Proletariat are the people who are really poor, they cannot afford the good necessities of life, right? तो मार्क्स ने कहा कि दो कैटेगरीज अलग-अलग हैं, एक है बोर्जुआस और दूसरा प्रोलेटरेट। अब आपने प्रोलेटरेट means generally a person who cannot qualify an exam, right? लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि दो बड़ी क्लासेस हैं, एक अमीर लोग हैं और एक गरीब लोग, बोर्जुआस एंड प्रोलेटरेट, और इस वजह से सोशियोलॉजी के हर एस्पेक्ट पे इनका असर पड़ता है, राइट। सो Marx also believed that entire system of economic, social, and political relationship that have established to maintain the power and dominance of the owner over the workers. ये अब आपको अंदाजा होगा कि entire system of economic, social, and political relationship,
पहली बात तो ये कि आपको अपने पर्सनल यूज के लिए सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर दे भी दी तो आप इनमें से ग्रेजुएट कन्वीनर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन सा यानी कौन से इश्यूज जो हैं वो एक नेचर के हैं और दूसरे कौन से दूसरे। तो मार्क्स ने ये कहा कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स दे आर एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन पावर एंड डोमिनेंस ऑफ द ऑनर ओवर वर्कर्स। मार्क्स का ये कहना था दुनिया में दो सोसाइटीज, दो तरह के लोग हैं, एक गरीब आम लफ्जों में प्रोलेटरेट और एक है अमीर लोग कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा है। और ये सारी की सारी जो अगर आप सिस्टम समझना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि दुनिया है किस तरह की, यहाँ पे किस तरह के सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती है, तो हमें इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स समझने पड़ेंगे और देखें कि कैसे अमीर लोग अपनी पावर और डोमिनेंस को रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। ये कोई अब से नहीं हो रहा, ये हमेशा से मार्क्स का ये कहना है कि होल ह्यूमन हिस्ट्री इज अबाउट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ रह ही नहीं जाएगा। जो एक तरह के लोग दूसरे लोगों पे से लड़ाई करते हैं, उनसे जंगे करते हैं, ठीक है, अपने मुल्क में उन्हें इग्नोर करते हैं या सप्रेस करते हैं, उसने कहा ये सारी की सारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है दैट इज अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, राइट। Marx also argued that the working class need to overthrow the existing class system. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसने कही। मार्क्स ने कहा कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कहते हैं एवोल्यूशन होगी ऐसा ऐसा, जैसे हम ये कहते हैं कि जमहूरियत ऐसा ऐसा चलेगी तो ऐसा ऐसा खुद ही 100 सालों में बेहतर हो जाएगी। मार्क्स ने इस तरह कहा कि ये जो अमीर लोग हैं ना, क्योंकि वो रीइंफोर्स, जिसके पास पैसा है वो और इन्वेस्ट करता है, उसकी एक और फैक्ट्री बन जाती है, ठीक है, इसलिए रीइंफोर्स वो करते जाएंगे। इसके लिए जो गरीब हैं, जो प्रोलेटरेट हैं, उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। वो इकट्ठा हो जाएंगे तो वर्किंग क्लास नीड टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग क्लास सिस्टम। जब वो इकट्ठा हो जाए सारे, तो वो जो एग्जिस्टिंग क्लास सिस्टम है कि जिसमें किंग थे और फिर उसके खानदान के लोग और फिर अमीर लोग, वो कहते हैं सारी क्लास सिस्टम को उठा के बाहर फेंक, राइट। So Marx argued that the working class need to overthrow the existing class pattern. अब आ गया एक और sociologist, Boyce, first black person to receive doctorate from Harvard University, contributed to the study of urban life and among whites and black. बॉयस ने कहा कि आप अगर ये पैटर्न समझें, शहरों में कौन सा पैटर्न है, कितने ब्लैक हैं, कितने वाइट हैं, उनमें कितने ड्रिंकिंग करते हैं, कितने नहीं, तो आप बगैर कोई देखे आप अंदाजे लगा सकते हैं कि कौन से लोग जो है वो रेलिवेंट हैं आपके प्रोजेक्ट। बिलीव्ड इन ग्रांटिंग अ फुल पोटेंशियल राइट टू ब्लैक पीपल, राइट। अब ये भी देखें, सोसाइटी का एक एस्पेक्ट था कि ब्लैक लोगों को ना तो ये इजाज़त थी कि वो वोट कास्ट कर सकें और ना ही ये कहीं इजाज़त थी कि वो यानी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जो सोसाइटी के उसमें शामिल हो सके। तो इसलिए इसने कहा, बॉयस ने कहा कि जो ब्लैक लोगों पे रिसर्च की इन्होंने, फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू रिसीव डॉक्टर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसकी बेसिस पे इसने बहुत सारी अपने राइटअप पब्लिश किए और लोगों को बताया अर्बन लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ही, इन अदर वर्ड्स, ही चैलेंज द स्टेटस को। उसने ये कहा, ये नहीं कहा कि जो हम कर रहे हैं वही करते जाएं, बल्कि ही चैलेंज द स्टेटस को, राइट। ओके, देन कम्स सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तीन बड़े पर्सपेक्टिव हैं। एक तो हम कह सकते हैं मैक्रो, बिग लेवल, राइट, एंड देन social perspective. Social perspective. So macro theories, theories of the society, which include macro theories, and then social psychological theories, micro theories.
अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लें तो मिक्सिंग का खदशा नहीं होगा। ओके, नाउ एज वी सेड देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। एक को हम कहते हैं, एक फिलोसोफर वो हैं जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे यकीन रखते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एक खास स्ट्रक्चर जो है उसे मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, उसमें लोगों को अकोमोडेट करें और जो है ना ये टीम्स टूट ना जाए। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का ऑथर कौन है मैंने अभी आपको बताया था। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज, आई मीन इट्स नॉट न्यू, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से होते रहे, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है, और क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि हर क्लास दूसरी क्लास से कॉन्फ्लिक्ट में, सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म should be replaced by the macro theories. Similarly, micro theories, symbolic interaction, right? Uh, symbolic interaction part of the micro. Micro theories वो हैं जो कि बहुत छोटे छोटे issues के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। ओके, देन कम्स फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ये भी हम ये थोड़ी डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, और फिर हम कुछ और ऑथर्स का पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में जिन्होंने हर्बर्ट के आइडियाज को चैलेंज किया, राइट। सो we have got conflict perspectives influenced by Karl Marx work, ठीक है ना, influenced by Karl Marx work, right? Okay, sociologists use a conflict model not only to encourage conflicts but also on conflicts that have no clear economic basis. Conflicts over conflicts, conflicts and behavior, right? तो 4 5 10 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये एग्जांपल दी कि सोशियोलॉजिस्ट यूज अ कॉन्फ्लिक्ट मॉडल नॉट ओनली economic conflicts but also the conflict, other conflicts, right? So conflict perspective, individual influenced by Karl Marx's work. As we said earlier, Karl Marx had huge contribution, right? Then conflict perspective assuming social behavior, right? Conflict perspective assuming social behavior is best understood in terms of conflict or tension among the competitors. Okay, so okay, so conflict perspective, ये मेरा ख्याल है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया। सॉरी, इसमें एक दो चीज़ें आती हैं, तो ये इधर से ना हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी माइक्रो थ्योरीज में कैसे फिट होती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एंड देन वी कैन you can move forward with our assignments or projects, right? So uh, that's all for today, right? If you have any question, you can post your question and I'll be happy to answer your questions, right? Okay.